एवरीवन, वेलकम टू बेसिक थेरेपी। आज है हमारा डे 2 ऑफ एफकैट प्रिपरेशन सीरीज और हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश से। इंग्लिश में हम कर रहे हैं सिनोनिम्स। एंड अगर आपने मेरा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप डे 1 का वीडियो देखें, फिर डे 2 पे आए। हमने डे 1 में कवर किए थे 30 सिनोनिम्स। इस वीडियो में हम करेंगे 30 सिनोनिम्स। आपको रूल्स पता है कि मैं 15 कराऊंगी और 15 आप होमवर्क के लिए करोगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 2 का पहला वर्ड है रैम्पार्ट्स। ऑप्शंस है स्कैफोल्ड, स्टेयरकेस, पैरापेट एंड रॉम्पवे। तो स्कैफोल्ड क्या होता है? तो स्कैफोल्ड इज अ वुडन प्लेटफॉर्म एट अ हाइट जहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूशन कराते हैं। स्टेयरकेस मतलब स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। पैरापेट मतलब वॉल जो होती है सराउंडिंग में अपने घर के, जो हम उसको कंपाउंड वॉल बोलते हैं, उसको पैरापेट वॉल भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव रॉम्पवे। रॉम्पवे मतलब जो बच्चे चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं ना, उस तरीके को रॉम्पवे कहते हैं। तो आंसर्स में हिंट देखते हैं। लो वॉल एट द एज ऑफ ए प्लेटफॉर्म। तो पैरापेट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट मीट्स द नियर डेफिनेशन ऑफ द हिंट। सो हम इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में? द अपार्टमेंट वॉज सराउंडेड बाय अ रैम्पार्ट। सो रैम्पार्ट मतलब पैरापेट मतलब एक कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। सेकेंड वर्ड इज पार्सिमोनी। ऑप्शंस आर बैंक्रप्सी, ब्राइबरी, एक्सपेंडिचर एंड माइजरलीनेस। बैंक्रप्सी मतलब अगर हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं वो सारे खर्च हो जाए and we don't have any more money to spend, that is called as bankruptcy. Bribery मतलब किसी को bribe देना. Expenditure is the action of spending money or spending. And miserliness is something in which you are unwilling to spend money. So I think it matches our hint, which is quality of being unwilling to spend money. So miserliness is the correct option. So parsimony मतलब माइजरलीनेस मतलब बिल्कुल खर्चा ना करने की आदत, बिल्कुल भी पैसा खर्चा ना करने की आदत। सो इसको हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? शी इज टू पार्सिमोनियस टू रेनोवेट द हाउस प्रॉपरली बिकॉज शी इज नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी on her house. She is called as parsimonious. She is too parsimonious to renovate the house properly. Then we have analogy. Options are comparison, deletion, addition and difference. So analogy hint क्या है? Denoting comparison. मतलब हमें जैसे अभी नॉन वर्बल रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है एनालॉगी के रिलेटेड, तो जिसमें दो वर्ड्स दिए जाते हैं। वर्ड 1 इज टू वर्ड 2, देन वर्ड 3 इज टू वर्ड व्हाट। सो इसमें क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं वन वर्ड को नंबर 2 के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या रिलेशन है। फिर सेम हम 3 और 4 के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? तो कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शन 1 कंपैरिजन इज द करेक्ट आंसर फॉर एनालॉगी। हम इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? इन हिज एनालॉगी द पोएट कंपेयर्ड हिज लव टू एन एंडलेस वेल। तो पोएट ने क्या किया है? उसकी पोएम में जो लव है, ही हैज कंपेयर्ड इट टू एन एंडलेस वेल। तो इस तरीके से एनालॉगी मीन्स कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 4 है एबरेशन। उसमें फर्स्ट वर्ड है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन मतलब कोई चीज किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ना, इंटेंसिफाई होना, इंटेंसिफिकेशन। डेविएशन मतलब डाइवर्जेंस, अपनी जो ओरिजिनल सोर्स है उससे दूर चले जाना। देन जस्टिफिकेशन मतलब एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज का, टू जस्टिफाई अबाउट समथिंग। रैशनैलिटी मतलब बीइंग लॉजिकल और रीजनेबल। तो हिंट हमारी है अनयूजुअल एक्शन। सो अनयूजुअल एक्शन मतलब डेविएशन, मतलब अपनी जो एक्चुअल में अगर कोई चीज सीधी चल रही है वो अचानक से अगर टेढ़ी हो जाए मतलब डेविएट हो रही है अपने सोर्स से, मतलब वो एक अनयूजुअल एक्शन हुआ। तो हमारा एबरेशन का आंसर हुआ डेविएशन। एंड हम इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? ही इज जनरली अ काम पर्सन सो दिस आउटबर्स्ट इज एन एबरेशन। मतलब जो इंसान यूजुअली एक काम बंदा है एंड नाउ दैट इज आउटबर्स्टिंग या फिर गुस्सा दिखा रहा है, तो दैट इज a sign of aberration, that is he is deviating from his usual self. Question number 5 is citadel. Options are mansion,
palace, fortress, and metropolis. Mansion is a very large residence. Palace, it is also a very large residence. The only difference between mansion and palace is the resident. Mansion can belong to anyone, and palace has a resident as a ruler, pope, or an important personality, king, queen. Then we have fortress. Fortress is a high ground where people could go when the city is attacked or when there is some program or anything. Metropolis is a very big city or the capital city. So the answer hint matches the fortress. So citadel is a fortress. Use in a sentence can be, the town has a 14th century's beautiful site of a citadel. Question number 6 is tinsel. Options are tin, colorful, decoration and tinkle. So tin is an element. Colorful मतलब full of colors, lot of colors. Decoration means किसी चीज को फैंसी बनाने के लिए or to make something look beautiful, you do decoration, to decorate. And tinkle means something that shines or add light to. And answer hint is stripes of shiny material like metal used as a decoration. So the word decoration is the correct answer for the word tinsel. यहाँ पे confuse नहीं होना है. Just because it has tin in it, you don't have to answer tin. So use in a sentence is a Christmas tree strung with tinsel, candles and present. So question number 7 is collate. Options are narrate, prescribe, describe and assemble. So the word narrate, it means to recite, to narrate a poem, to narrate a story. So you are telling it to someone else. Now we have prescribe. Prescribe, it means to suggest, to recommend someone something, like doctors prescribe us medicines. Then we have describe. Describe मतलब explain करना किसी चीज के बारे में, to give a description of something. It can be anything, an object, place or anything, to describe. Then we have assemble. Assemble means to arrange things in an order. So our hint matches with the option number 4, assemble, which means arranging in the correct order. So the word collate, it means assemble. And how we can use it in a sentence? The photocopier will collate the documents for you. Which means अगर आप किसी शॉप में जेरोक्स निकालने जाओ, जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी निकालने जाओ, तो वो क्या करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑर्डर में अरेंज करके दे देंगे. They will collate the documents for you. Next in line we have advocate. Options are pronounce, support, predict and determine. So pronounce मतलब उच्चारण, to pronounce something. Support मतलब किसी चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी चीज को सहारा दे रहे हो. Then we have predict. Predict मतलब पहले ही अनुमान लगाना किसी चीज का. And determine मतलब डिसाइड करना कुछ. So answer is to argue for या support a cause. तो advocate आपको पता है, एक मतलब लॉ, इसमें advocates होते हैं, lawyers होते हैं, तो उसी वर्ड से आप हिंट ले सकते हो कि सपोर्ट करना किसी चीज को, to support a cause. So use in a sentence can be, I don't advocate doing illegal things. I don't support doing illegal things. Question number 9 is Willy. Options are stupid, wise, cunning and angry. So stupid मतलब जिसको कुछ समझ नहीं आता है, बेवकूफ या फिर someone who is not smart is stupid. Wise मतलब intelligent, smart. Cunning मतलब clever. Angry मतलब गुस्सा करना, so to be mad about something. Answer hint is skillful, cunning and clever. So our option number 3 is the correct answer, cunning. And how can we use it in a sentence? Foxes are supposed to be wily creatures. So we know, we always use this term, fox are cunning, cunning fox stories भी होती है, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो. Question number 10 is invoice. Options are language, statement, word and sound. Language मतलब भाषा, statement मतलब किसी चीज का अकाउंट देना या फिर रिमार्क देना, word मतलब शब्द and sound मतलब आवाज. Hint is list of goods that has been sold or bill. तो ऑप्शन इन चारों में से the closest option is statement. तो हम statement of marks भी बोलते हैं, जिसमें हमें लिस्ट दी जाती है मार्क्स की सब्जेक्ट्स के हिसाब से. सो हमारे हिंट से वो मैच करता है. तो इनवॉइस मतलब स्टेटमेंट.
Use in a sentence can be getting an invoice in written after the payment is the right of every consumer. मतलब अगर कोई चीज खरीदते हो तो उसके बदले में आपका बिल लेने का पूरा अधिकार है. Question number 11 is venal. Options are corrupt, legible, forgivable and comprehensible. Corrupt it means dishonest. Legible मतलब readable जो पढ़ा जा सकता है. Forgivable मतलब excuse किया जा सकता है जिस चीज को वो. And comprehensible मतलब जिसको हम interpret कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं. Something that is easy to be understood. And hint is someone prepared to do immoral or dishonest things in exchange for money. So option number 1, corrupt, is the correct answer. Venal, it means corrupt. So how can we use it in a sentence? Venal employees are the disgrace to this society. That means corrupt employees are the disgrace to the society. Question number 12 is gruesome. Options are hideous, insulting, exhausting and sullen. Hideous मतलब ugly, insulting मतलब humiliating, अपमानास्पद, and exhausting it means tiresome, and sullen it means angry, gloomy, or anything that is in a bad mood, bad tempered. Hint is ugly and disgusting. So option number 1, hideous, is the right option. Use in a sentence: there are unsolved cases of gruesome crimes. Hideous crimes, ugly crimes. So gruesome it means hideous. So question number 13 is apprise. Option number 1 is inform, 2 is assess, 3 is conceal and 4th is praise. Inform it means to keep somebody in check, to keep on updating someone about something. Assess it means to help, conceal it means to hide, and praise it means to किसी की तारीफ करना, praising someone, to compliment someone. Answer hint is to inform someone. So option number 1, inform, is the correct answer. To keep someone apprised. Use in a sentence: the juniors should apprise their seniors in case of any discrepancy. मतलब juniors ने अपने seniors को inform रखना है about all the discrepancies that are going on. Question number 14 is expeditiously. Option 1 is gently, option 2 is meekly, 3 is quickly and 4th is rudely. So gently it means calmly, meekly it means also gently या फिर quietly करना कुछ चीज, quickly मतलब fast, rudely मतलब in an offensive way, insulting way. So hint is actively and intently. So option 3, quickly, is the correct option. So expeditiously it means quickly. Use in a sentence: the couriers provide expeditious services via airways. Just because वो via air जा रहे हैं तो वो service fast हो जाती है, इसलिए वो expeditious हो जाती है. Question 15 and आज का last word है literal. Option 1 है formal, 2 है outdated, 3 है verbatim, 4th is idealistic. Formal it means conventional. Outdated मतलब out of date, something that has been expired. Verbatim मतलब word for word or letter for letter, that is exact same words. And idealistic it means way towards perfection, yeah, unrealistic idea to be perfect. So hint is exact or real. So out of all the 4 options, option 3, it means word by word or letter by letter, that is exact the same. So verbatim is the synonym for the word literal. And how we can use it in a sentence is: knowing the literal meaning behind the conversations help us avoid misunderstandings. If we are able to understand a person word to word by word, whatever he is saying, तो misunderstandings नहीं होंगी, because we are able to bring out the exact same meaning what is trying to say. So here we come to an end of today's session, and we have learned 15 synonyms. We have also learned about the 4 options associated with it and how to use it in a sentence. So based on how we have learned it, I have designed a comprehension for you. It is less of a test and more of a homework for you all to prepare. And these are the questions which were asked in previous year question paper. So they are very important. All you have to do is you have to pause this video right here, attempt all these questions without preparation first. If you have got your answer right, then give yourself +1. If you have got it wrong, give yourself -1. And all the best for the comprehension. These are the answers for the comprehension that you attempted.
it's okay if you've got most of it wrong. Nobody would get it right in the first attempt. So what you have to do is, if you have got it wrong, and even if you have got it right, all you have to do is you have to study each and every word. You have to find out the meaning of the options as well. You have to try to make sentences based on them, because it will help you memorize it and keep recalling it, revising it again and again, like you would have done in your school days. And I would follow the traditional method of writing it down. But if you don't have time to do so, what you can do is मन ही मन बैठे बैठे इन पे sentences बनाना start कर दो, ताकि आपको याद रहे. And if you are enjoying the sessions, we'll be making day 3 on synonyms, which will be the last video on synonyms, and we'll be moving ahead with antonyms and idioms and phrases as well. So if you're enjoying my sessions, consider subscribing to my channels, and thank you for practicing with me today. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो. इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.